you can also think of squamous cell carcinoma, obviously, or AK. But in this case, we had multiple lesions. And in this case, we have a dye white scale and then monomorphic and symmetrical red dots. Psoriasis, no question. So similarly, what would be the diagnosis? Again, we are looking at these little vessels with a scale. So it will be an example of psoriasis. Why? Because monomorphic and symmetrical red dots with a scale. And if you look at histology, where those a scale comes from, obviously hyperkeratosis, then those neutrophilic deposits in psoriasis, and those vessels come from here. And this, which I love, confocal microscopy. You can actually, confocal is without cutting. You can look at cell keratinocytes or similar features you can see there too in confocal microscopy. So let's go to this one. So now picture the one which we already did. They were monomorphic red blood vessels and there was a white scale. Now this is my or our illustration of this next condition. In this case, you have irregular dots and scale could be different color like yellow versus white. And if you then take it to dermoscopy, this is what it would look like. So in this case, there is scaling. There are blood vessels, but they are not monomorphic or regular. And yellow scale. So scales could be little crusty there as compared to the psoriasis one. Sometime, even clinically, it's difficult to separate psoriasis from eczema. But if you use dermatoscope without biopsy, you can pretty much tell that we are dealing with eczema and not psoriasis. So here is an example. Just picture this one versus the psoriasis one we saw. Here you have yellow crust and scale. You have some blood vessels, but they are not regular like psoriasis. So pretty much, if you have this one, any of you, although clinically, professors like Tahir, they don't need dermatoscope to diagnose, um, psoriasis versus eczema. But in a given case, it can be difficult. And if it's difficult, then you put the dermatoscope and you can tell this is eczema, not psoriasis. So in this case, these are polymorphic and asymmetrical red dots as compared to psoriasis. And then the scale could be white or yellow as compared to psoriasis. So another example where you have some blood vessels, you have some crusting and some scale. So in this case, anybody? Oh, it jumped. Hold on. So basically I was showing eczema in this case again. As you know, eczema or dermis eczema can be acute with a lot of blisters, can be subacute with few blisters and scale, and can be chronic. So in this case, similarly, when you're looking at dermatoscopy, keep that in mind. Some of them will have more vesicles, other will have more scale, other will be more keratotic. So in this case, this is eczema. And if you want to do histology, spongiosis, exocytosis. But the cool thing is, you in confocal, without this, in confocal you can show there is a blister, exocytosis, and spongiosis. But confocal में होता ही है कि you're looking at horizontal view, तो वो vertically नहीं नजर आ रहा, तो you have to imagine like most section कि epidermis ऐसे नजर आ रही. So in that case, that's a blister, exocytosis, and spongiosis. So this is eczema. So now, if you just want to conceptualize, this is not written in any book yet. We are making an attempt to try to publish, and I'm looking for suggestions if Aisha or Rabia or Shwana or whoever has it. But we think we can, illustration-wise, on this side, monomorphic symmetrical red dots with white scale. On that side, polymorphic and asymmetrical red dots and white or yellow. So we can pretty much tell, but important is to, if you want to diagnose this, keep these things in mind for pattern कि ये ऐसे होगा.
So we go to the next. Let me see if I skip something. No. Yeah. Okay. So this illustration earlier I was showing it to Aliza, one of the dermatologists here. And this may not be a great illustration, but just think about it. There are these white lines and blood vessels in between. Illustration for an other condition in skin. And then here what we have is a central white scar-like area that may or may not happen, but central and peripheral dots or lines. So this one, then obviously again, you don't need dermoscopy to diagnose lichen planus, but if you're trying to put it in a pattern, those thick white lines and then irregular dots, that will go for lichen planus. But important thing is much different than psoriasis and eczema. So with dermoscopy, you can already tell this is not one of those, probably lichen planus. So how about this one? So just a little, again, there are irregular dots on the periphery and scar in the middle. So this will be your another case of lichen planus. So if clearly, if you look at this versus remember psoriasis versus remember eczema, this look totally different, and keep that in mind, and you should be able to diagnose. This is lichen planus, you all know, interface dermatitis, lichenoid inflammation. Similarly, on confocal, we can show that there is inflammation, these white dots. All these in confocal are inflammatory cells. And if they are centered around the dermoepidermal junction, then we call it is lichenoid or interface dermatitis. Next year, when Aisha invites me to this course, I'll teach a little bit of confocal next year beyond dermoscopy. So this is again lichen planus. How about this one? These are illustrations not in the book. I may be wrong or my fellows may be wrong, but as I said, we're making an attempt to give it some patterns. So anybody wants to guess, these are some irregular blood vessels and erythema underneath. And here we go. So linear reticular vessels, जो कि basal cell जैसे लगती हैं, and just erythema. So rosacea, obviously you don't need dermatoscope for rosacea, but if you want to, this is how it would look like in my point of view, with those reticular vessels and redness. All right, we go to another condition here. If you notice, the scale is at the periphery and there are some dotted vessels. And this is, we're trying to draw this illustration for this condition, which is, you all know, PR. So irregular grouped small vessel. जैसे उसकी insect bite की नहीं होती, दो तीन कट्ठे papules. So in this one, you'll see grouped vessels, few of them, and then obviously peripheral white colorate. So again, you don't need dermatoscope to diagnose PR, but if you want to learn, this is, let's go back. So peripheral scale, and then few grouped vessels in between. So PR. So this is the example we saw. How about this one? Any student, fellow, resident want to shout out what is this illustration for? Elisa knows. Yes. So she says porokeratosis. So here it is. So again, the lesion in the middle, the scale around it. So central homogeneous area, then uh, surrounded by marginated white peripheral rim. So this is the room, and then the central area, homogeneous area. So porokeratosis, again, you don't need dermatoscope, but if you want to draw it, this is how it should look like. All right, who wants to get this one? This is our illustration of some condition, which is perifollicular. There is some redness and there is some scale. So here we go. So if I have to draw discoid lupus, that's the best we could came up with, where you have follicular yellowish plug because these plugs from hyperkeratosis, and then a perifollicular whitish halo. You will see that halo around some lesion, and then a white scale. So if you remember these and you're trying to separate these from lichen planus, psoriasis, eczema, whatever, you can do that because this looks very different than what we saw previously. So discoid lupus. Now the quiz. So basically, we reviewed psoriasis, eczema,
lichen planus, PR, porokeratosis, rosacea. So these are most common inflammations anyway. And if you, by now you probably have an idea in the head, how do we do that? So we take a question. Okay, now what is the diagnosis? Our teaching is ending. Is it lichen planus, lupus, psoriasis, eczema? How many eczema? Okay, so eczema wins. Basically, why? Not that you need a dermatoscope, but if you do, there is a scale, there is a yellow crust, blood vessels are not regular. So eczema, no question. That was our illustration. How about this one? Now, by then, we have learned by now, yes, psoriasis. Okay, so easy, you know, good symmetrical vessels on a scale. Okay, how about this one? Lichen planus. Okay, let's see how are you right. So lichen planus. This some of my fellows are not agreeing to this that, but we're trying to edit it. But this is our lichen planus, and we basically end with this. What we're trying to do is so have an ASAP uh, like a flow chart for where you have multiple red lesion. Then you can go either towards eczema or psoriasis, and then lichen planus versus some of the condition I didn't show, but we just talking PR, lupus, lichen planus. So we are sending it for publication as a concept to approach skin inflammation on dermoscopy. So I am ready for all questions. Let me see if there is something else after this. Sorry. यार उसको एक दफा दोबारा लगाना उसको मे बी आई एंडेड और क्या हुआ I actually want to say if anybody wants to contact us for research, teaching, or learning, or whatever else, so the best thing we say is go find me on LinkedIn. If you can't, then you shouldn't be looking for it. But अगर किसी को चाहिए तो Aisha, she has my contact if anybody have questions, research ideas, or whatever else. So I'm open for questions now. I always save time in my lectures. Ji, yes, Aisha. Ji, ji. सो सो जो ग्रुप डॉट्स दिखा रहा था मैं जी जी सो बेसिकली जो उसमें इन इन दैट वन अगर आप हिस्टोलॉजी भी देखें ना जैसे सोराइसिस में बड़ी सिमेट्रिकल होती है प्रोलिफरेशन हर में बट इन दैट वन इन द पीआर उसमें actinic yeah so basically actinic keratosis bone disease psoriasis they all have blood vessel proliferation going towards the epidermis और उनकी basically most of the time the epidermis on top of it little bit thin so you can see them significance is I think they just feed the epidermal growth otherwise significance wise I don't know why they are grouped like this but all these conditions have it and it's hard to tell कई दफा के अगर सिंगल लीजन है क्लिनिकल इंफॉर्मेशन नहीं है यू लुकिंग एट AK bones or psoriasis you need the other information जी 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 ड्रमास्कोपी के अदरवाइज मोस्टली तो आई थिंक यू गो जो नॉन पिगमेंटेड में वी गो नंबर वन ऑन ब्लड वेसल्स जो आर ब्राइडिंग ब्लड वेसल एंड दैट लिटिल ट्रांसलूसेंट रेड पैप्यूल अंडरनीथ तो उसमें जो सारे स्पोक व्हील ग्लोब्यूल वो नहीं होते इतने बट यस सो आर्बराइजिंग वेसल्स and a red translucent papule underneath. Usually that's the number one presentation जो type 1 to skin में. Anybody else? Any students, residents? जी 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 आयमा
Once again, by the way, this is beautifully organized because ladies are leading it. जी बताएं. जी. For जी. जी. Yeah, I think Aisha was talking earlier too. So जो भी अभी एक तो है ना कि डर्मास्कोपी पे उनको कैसे recognize करना dark skin, light skin, which you all know and we know how to do. But if you're trying to do research for future and AI extra, so we would need data from both sides. और अगर वैसे data खरीदें तो it's pretty expensive. But because all our collection is on electronic medical records, so I have my own about 1 million lesions, so we can use it. आपके lesions के साथ मिला के जो भी कुछ करना चाह रहे हो, because we have everything electronically. So that data becomes easier if we use our own data. So if there is a project जहाँ पे वो mix करना, we can put it together. Yes. जी. Certain things जैसे लेट्स से कि उनको सोराइसिस है डार्कर स्किन में टाइप 5 स्किन में तो अरिथीमा तो नजर ही नहीं आता जो सो कॉल्ड अरिथमेटिक स्किन इट्स आई कॉल इट ए ब्लैकीमा और समथिंग क्योंकि वो रेड होता ही नहीं है सो दैट obviously is difficult so the only thing you're अगर उनको itching हो रही है इन्फ्लेमेशन है रेज लीजन नहीं है अरिथीमा है then it's difficult to see so erythema is the missing part in darker skin others तो ठीक है जी उमर जी I saw 1.5 millimeter. 1.5 millimeter. Yeah, this is an Asian lady 3 months ago, जिसके upper lip पे usually Asian जो हैं they don't get, but that was 1.5. Yeah, जी. And I picked it under Dermascopy by the way. जी जी जी. So melasma basically yes. So before you plan the treatment for melasma, it is obviously important to know कि ये epidermal है, dermal है कि combined है. Then treatments will work or not work. So dermoscopy you can tell by the colors कि ये deeper हैं कि superficial हैं. But so nowadays actually many people, I'm sure Aisha you will be doing, we have started using dermoscopy for treatment monitoring. कि अगर वो ठीक कर रहे हैं what is happening to the skin in reference to inflammation or papule की thickness and all that. But so melasma में usually you used to use the light other light जो woods light के देखने के लिए but dermatoscopy can do it easily if I mean it's an expensive tool but confocal does beautifully जितना भी pigment है पूरा नजर आता है कि कहाँ पड़ा है कितना पड़ा है and as you hit it you can see is it responding or not so it is really important to have a dermatoscope before you start with chemical peel laser cream जो भी करनी है but it's really important to use the dermatoscope जी 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 Aima versus Aisha. I just wanted to add together. So I consider that she should be given the first chance Yes. because she has done it all. जी सर आई जस्ट वांटेड टू ऐड सर हारून ने जो क्वेश्चन किया था क्योंकि हमारे यहाँ एक मिलाजमा की जो लेटेस्ट टाइप पता चली है एरिथेमेटोटेलेंजेक्टेटिक टाइप ऑफ मिलाजमा तो दैट इज प्रीटी मच पिक्ड ऑन डर्मोस्कोपी क्लिनिकली वो इतना ज्यादा पिकअप नहीं होता है जी जी बहुत ज्यादा वेस्कुलरिटी होगी टेलेंजेक्टेजियाज होंगे तो वो पिकअप होता है विद नेकेड आई अदरवाइज डर्मोस्कोपी डज वेल इन yes yes एरिथेमेटोटेलेंजेक्टेटिक और उसका चूंकि प्रोग्नोसिस सबसे पुअर है तो वी कैन स्ट्रेट अवे गाइड द पेशेंट एट द वेरी फर्स्ट मीटिंग कि ये वाला जो मेलाज़्मा इट्स गोना टेक टाइम। हाँ एक जगह पे डर्मेरोस्कोपी यू शुड स्टिल यूज जब विटिलाइगो के ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना यू कैन पिक ऑन डर्मेरोस्कोपी मच अर्लियर बिफोर क्लिनिकल के पिगमेंट आने लगा है और थीमा हो गया दैट मीन इट मे वर्क सिमिलरली ऑन एलोपेशिया एरियाटा उस पर अर्ली पिक कर सकते हैं कि मेलानोसाइट्स मूव हो रहे हैं कि नहीं
इसमें vitiligo So, में. like related to the earlier what we have been discussing, like we are already conducting a study in which we are using dermatoscope to assess the effect of PRP, and along with that we are doing IPL for the treatment of rosacea. That is for seeing the improvement. And another thing, melasma, sir ने बड़ा rightly mentioned किया. In addition to this, the periorbital hypermelanosis, the dark circles. वहाँ पे तो उससे भी बड़ा क्वेश्चन होता है कि is it vascular, it's pigmentary, or it's just the shadowing. तो हम वो आयशा ने आइडिया दिया था, वी आर वर्किंग ऑन दैट टू dermatoscopic features of the periorbital hypermelanosis. So we are working on that. Soon the results will be there, तो हम वो इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे. I'm so happy nobody asked me a filler question because I wouldn't be able to answer. But जी Harun, जी dermatoscope का जी या dermatoscopy. I believe कि it is our stethoscope, but in the era of AI, how we are going to integrate dermatoscope and AI? जी. This is, there are so many applications now using photos, dermatoscopic photo, and trying to diagnose skin lesion. Most of them, there are 3 or 4 of them which work pretty good. They're above 89, 90%. So I think it will very soon, within 3 to 5 years, ये होएगा कि when me or Aisha or Harun or Tariq, they look at a lesion, we first जब scope रखेंगे, first we'll see कि scope क्या कह रही है, उसमें AI लगा होगा कि biopsy or not biopsy, psoriasis or not psoriasis, and then we will say okay, I agree or not. तो ये apps बन रहे हैं. You guys have so many data. I think we should start our own. And होता ही है end में कि अगर let's say the app was made in New York, but when I give it to King Edward or Allama Iqbal or Lahore, then the app doesn't work क्योंकि उनका data different होता है. So once we mix few data, that I think it will improve. There is no question within 3 to 5 years, Dermascopy पहले app बताएगा, then you will decide, and also it will be tally क्योंकि it's so easy to do कि photo लेके भेजें and then fit. So it will be all AI based Dermascopy and then also using a lot of tally जो कि हो रहा है, अब बेतहाशा हो रहा है जी. जी जी. No, no. So this is a good start today. Like Aisha's lecture was like as good as it gets. So you understand the basic, and then you slowly move on to top whatever else. So इनके लिए बड़ा important है पहले dermoscopy सीखें, और then we'll go to other things slowly, AI and other telemedicine. तो पहले dermatology सीखें botox लगाने से पहले. जी जी जी. Thank you so much. I'm sorry my lecture was short, but I thought that's a different idea. We just जी. आई थिंक स्कैल्प में बड़ी हेल्प होती है जब आप करें ना कि एलपीपी है कि डिस्कॉयल ल्यूपस है कि सेबडर्म है कि सोराइसिस है. दैट्स वेयर इट मेक्स द डिफरेंस, एंड आल्सो इन सम एलोपेशियास. सो स्कैल्प में बड़ी हेल्प होती है. स्किन पे तो एट दिस लेवल एवरीबॉडी नोज एक्जिमा वर्सेस सोराइसिस. बट ये है कि अगर पेशेंट को कंफर्म करना है कि देख रहे हैं नहीं पता लग रहा, यू पूरे डर्मेरोस्कोप, आई एम प्रीटी श्योर कि ये सोराइसिस है, एंड देन पेशेंट इज हैप्पी. बट स्कैल्प पे बड़ी हेल्प होती है डर्मेरोस्कोपी की इन डिजीजेस एंड एलोपेशियास. जी 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 जी. नॉट इन नॉट इन सर्टन थिंग्स जैसे कि सोराइसिस एक्मा लाइकन प्लानस में तो हम एनपीआर ड्रमेरोस्कोप करके यू कैन बी ओके. लेकिन ड्रमेरोस्कोपी का लीजन्स में फ़ायदा ये होगा कि अगर बेजल सेल आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, मेलानोमा इन साइटू सस्पेक्ट कर रहे हैं और एससीसी सस्पेक्ट कर रहे हैं, देन यू वोंट डू बायोप्सी, पर उसको पूरा ही रिमूव कर देंगे ना. तो वन स्टेप, लाइक जब कई दफ़ा बायोप्सी करते हैं तो यू डू ए शेप बायोप्सी और छोटा सा लेते हैं. बट इफ इट नो ऑलरेडी ये बेजल स्क्वेमस मेलानोमा हो सकता है, देन यू कट इट आउट, तो एक स्टेप बच जाएगा. जी
जी लेवल पे और 50 है, लेकिन अगर ये बीमा है psoriasis, eczema, Yeah. LP, PR इन्फेक्शन है, इनमें अगर डर्मेटोस्कोपी से डायग्नोज हो गया तो यू डोंट नीड टू गो No, inflammation we don't. ये वाला टीचिंग पर्पसेस के लिए कह जी जी जी. एज ए टीचर इन ए मेडिकल कॉलेज और इन यूनिवर्सिटी यू डू नॉट रिक्वायर टू टीच देम कि जी बायोप्सी मैंडेटरी है, अब आपको अब हो गया, psoriasis का पता आ रहे लगे हो। डर्मेटोस्कोप पे आपने चीजें You definitely don't. Inflammation पता लग गया, then for patient satisfaction you may do it, but आपको जरूरत नहीं है. जब एक दफा मैं किंग एडवर्ड गया तो शबीर साहब बैठे थे, तो उन्होंने कोई मरीज आ गया, कहते राव की है. मैंने उनको कहा कि मैं सर बायोप्सी करते, उसमें मैं नया नया था रेजिडेंसी से निकल, कहते छठ बायोप्सी ने पोरो कैराटोसिस देगा. So you don't need biopsy in inflammation, but basal cell squamous cell melanoma इसलिए कि लीगल उसकी implications है. Then you would to confirm. और अमेरिका में तो अगर आपने बिल करना है ना, मैंने सर्जरी की है, you have to have biopsy, otherwise इंश्योरेंस पे नहीं करती. नहीं, So एक you और will do it एक first. और जो था वो ये था कि मेलानोमा में फॉर एग्जांपल आपने अगर कंफर्म भी कर लिया, यू डोंट नो द डेप्थ, इस पे पता Exactly. नहीं चला, और डेप्थ इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, तो ये बड़ा जरूरी है उसके लिए ना कि बायोप्सी के मेलानोमा बगैर। में स्क्वामस में पता लगे कितना डीप है, बेसल में भी इन्फिल्ट्रेटिंग है कि कौन सा है. So we need, but other than those three lesion, I mean MF you don't know, but you don't really need it. Yeah. बिल्कुल जरूरी होती है. हिस्टा वो बड़े खुश होते हैं, जैसे स्कोप रखें कि हाउ डू यू नो, हम कहते हैं ओके इट्स बनाइन, हाउ डू यू नो, बिकॉज आई हैव दिस, तो वो कन्विंस हो जाते हैं कि कुछ लगाया ऊपर. बट इन अमेरिका वी से वी डू बायोप्सीज फॉर 3 रीजन. वन इज के पेशेंट खुश हो जाता है, दूसरा है कि आपको लॉ सूट नहीं होता, तीसरा है कि पैसे बनते हैं. सो एनीवे एनीवे जी 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 जी. That, आई थिंक इट विल वर्क ब्यूटीफुली. अभी एक कंपनी है पाकिस्तान में, इजी शिफा, शायद आपने सुना हो. उन्होंने एक छोटा सा वो बनाया है, जैसे कैरोसेल नहीं होता, उसके सामने पेशेंट बैठा है, उनके पास अदर देन वो ईसीजी वगैरह सारा कुछ चेक करना, उनका डर्मेटोस्कोप, वीडियो डर्मेटोस्कोप है. तो वहां से उनका जो कंसल्टेंट कराची में जहां भी वो बैठे हैं, दे कैन से ओके फाइन फाइन फाइन. सो इन इन्फ्लेमेशन इन रिमोट एरिया, परफेक्ट केस सिनेरियो. जी जी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir, for excellent talk. Now I'd like to invite our guest of honors, all of you, sir. Please come on the stage and have few words for us. Sir, Professor Atif Kazmi, sir, Professor Harun Nabi. sir, before shield distribution, I would like to invite Professor Dr. Azim Jahangir. Sir, please come on On stage. stage. Professor Atif Kazmi, sir. Respected Professor Dr. Atif Kazmi, Professor Harun Nabi, Professor Tariq Zaman, and our President DOTS, Professor Tahir Jameel. Sir, please speak a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to pay my compliments and gratitude to Dr. Aisha, Dr. Baba Rao, and their whole team, including Vijaya and Ima and everyone, that the way they have organized this dermatoscopy seminar, and the first of its kind with a huge attendance, and being a Sunday, and a Sunday day when everyone, especially the females I see, they are busy with their families, and they are busy nowadays, so many functions, weddings in the afternoon, in the evening, but still I see a number of postgraduates, number of consultants, faculty members, all here. So it's very heartening to see that the interest that has been generated by this seminar or this workshop on dermatoscopy has been excellent. We are just talking of Botox, fillers, threads, lasers. Harun is here, Azeem is here. So now we have another avenue for you people. It's not only always
the things of the past, we are getting into the newer modalities. It is not new, obviously, it is old, but now the emphasis, the importance of dermatoscopy has today been launched in Pakistan officially. It was there. Aisha has done a lot of good work, and the YouTube channel, her links on the YouTube, WhatsApp group, everything is there. But today, the gathering and the lectures, the presentation, they were, I personally feel that they would go a long way in helping us, all of us, especially when Raw Babar is here. And Raw Babar is an authority. I know Babar since years and years. When he used to live next to my home, my father was alive. We used to live in on the Firozpur Road. He used to live in near Shama Cinema. Opposite Shama Cinema, there was the Shadman Road, and me and we used to play football or cricket together in that street where he used to live. A young chap. So, Raw Babar, we are very grateful to you, sir. You are here all the way from USA, and the way you have presented your talk, your presentations, they were very enlightening, illuminating talks. And as you are, mashallah, an authority now on dermatoscopy, dermatopathology, and a big name. And we are very proud that a Pakistani there in UK, in USA, is a known figure, and not only in Pakistan but globally. Mashallah, you are a person who is acclaimed all over the world now. So Aisha, my gratitude and my compliments to you. Excellent presentation. And let me tell you that all of you youngsters who are sitting here, these preparations must have started 3 to 4 months earlier. It's not a matter of days or weeks, it's a matter of months when you prepare such an academic session with so many people around. Aisha must have been working 24/7 along with a team of die-hard supporters. Ima, obviously, I know wherever you see Aisha, Ima would be there. हाँ, तो कई दफ़ा तो जो आयशा का हस्बैंड है वो जेलस आते हैं इमा को देख के कि यार मेरी बेगम के साथ हर वक्त ये चिमड़ी रहती है, इमा जो है ये उसका पीछा नहीं छोड़ती. So I think again I would like to thank the organizers, and especially Aisha and Ima and Rao Babar for their presence here and for inviting me to be a part of the seminar. And inshallah, we hope that this is the first in Lahore. Next time it may be in Islamabad. Then we go to Karachi. We can go to ultimately other cities as well, except for Quetta or Balochistan. I have my reservations कि वहाँ के अभी नाम जाएं, बाकी हम लोग करते चले जाएं. So best of luck for the future, and God bless you and your team. And we are all with you. We would support you right till the end. Whatever support you require from me or Azim or Haroon or senior people, we are always there to help you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you for your valuable comments. Now we would like to hear from respected Professor Dr. Azim Jahangir. There are only a couple of comments. So how many aesthetic physicians are here? No, just the aesthetic physician. सिर्फ एक दो ही लग रहे हैं. एस्थेटिक फिजिशियन नहीं, अब सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. सो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज वी आर बैक टू अवर बेसिक्स. तो पहली दफ़ा हुआ है कि एस्थेटिक फिजिशियन कोई नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो बाकी. तो आपको बड़ा प्राउड होना चाहिए बीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट. सेकंड चीज़ ये है कि यू शुड बी वेरी प्राउड आयशा कि आपने बोटॉक्स और फिलर्स के अलावा भी इतने सारे लोगों को जमा कर दिया. तो दैट्स वेरी, और ताहिर साहब को भी. तो ये आपकी सेकंड है. थर्ड ये है कि बाबर राव साहब जो हैं, ये अमेरिका में भी जब डर्मेटोस्कोपी शुरू हुई थी, उस वक्त मैं छोटा होता था काफ़ी. तो उस वक्त भी ये और एक अशफाक मरबूब थे, वो दोनों जो थे वो उस वक्त वहाँ पर भी डर्मेटोस्कोपी के माहिर होते थे, क्योंकि जितने लीजन हमें पता नहीं चल रहे होते थे पिगमेंटेड, वो हम इनके पास भेजते थे. तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दम. बस इतना ही, आपका टाइम ज़ाया करेंगे. Thank you very much for arranging it. Thank you so much, sir. Now we would like to hear from Professor Dr. Tariq Zaman. Please, sir, speak a few words.
अच्छा, बहुत कुछ पहले हो गया, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा, मैं मुबारकबाद कंग्रेचुलेट करता हूँ। ऑर्गेनाइजर्स अ वेरी गुड डायग्नोस्टिक टूल फॉर अस, और इसमें इस स्किल को बहुत सीखना चाहिए, बड़ा हेल्पफुल है। और मैं आई ऑलवेज गो फॉर सम डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, उसमें स्किल्स में। तो मैं तो खुद यहाँ सीखने आया था और बहुत कुछ सीखा, तो और भी सीखूंगा। तो again, I congratulate to the organizer for a very good workshop or seminar. Thank you so much, sir. Last but not the least, we would like to hear something from the pioneer of aesthetic dermatology in Pakistan, none other than Professor Dr. Haroon Nabi. Please, sir. हेलो हेलो। मैं तो इस बात पर बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, और आई विल लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट के आई कैन सी कि डर्मेटोलॉजी इज कमिंग बैक एंड डर्मेटोलॉजिस्ट आर टेकिंग देयर चार्ज बैक। और अगर हम इसी तरह सारे इकट्ठे डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे तो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी विल बी ए सब्सिडरी ऑफ डर्मेटोलॉजी रदर देन एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की सब्सिडरी डर्मेटोलॉजी बन जाए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टर जो कि सोशल मीडिया पे जिनके लाखों के हिसाब से फ़ैन हैं, दे आर द बिगेस्ट और नोन डर्मेटोलॉजिस्ट, हालांकि उन डर्मेटोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज हम सारों ने एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट एक ये साबित कर दिया है कि वी आर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी इज सब्सिडरी ऑफ डर्मेटोलॉजी। ए बिग हैंड टू ऑल द डर्मेटोलॉजिस्ट। Thank you so much, sir. मैं जब आ रहा था ना, तो मेरे जेहन में यही था कि क्योंकि वो ये तो सारा क्लिनिकल का मसला है, स्टैटिक का तो कोई कंपोनेंट नहीं है, तो बहुत थोड़े से बंदे होंगे। और मुझे एंटर हुआ तो बहुत हैप्पी हुई और फिर खुशी हुई कि वाकयातन जो आपकी बात है कि जी डर्माटोलॉजिस्ट और इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड पीपल जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि लोग चाहते हैं कि अभी डर्माटोलॉजी भी सीखें। ठीक है, एस्थेटिक इज, जैसे अरुण ने बताया, सब्सिडरी है, उसका कंपोनेंट है, बट यू मस्ट नो द बेसिक्स डर्माटोलॉजी। Thank you so much, sir. Now is the time to celebrate excellence. I would like to invite Professor Dr. Babar Rao to receive his shield. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite the driving force behind this event, our second speaker of the second session, Dr. Aisha Ghias. Thank you. Now is the time to say thanks to our sponsors, without whom this event would not have been possible. I would first like to invite Chaudhry Rashid Hussain Saab of Serving Health to please join us on stage. From conceptualization to execution, Rashid Saab, along with his team, have been instrumental. Please have a big hand. Rashid. Since we are getting our guest on the top, I just want to mention that no doubt Harun Nabi is known to be one of the aesthetic physicians, but four of his under supervision undergraduates, they are doing their research on Dermoscopy. The biggest department of no hospital is the Ghoki Hospital.
Well done. From dream to reality, this event would not have been possible without the support of Rashid Saab and his team. Big hand for serving health. Next. अच्छा ये जो लाइट क्या Moderator will run. Thank you. Thank you. Light, camera, and action. Yes, now is the time to invite and present the shield to our multimedia partner, Martin Dow. I would like to invite Mohammad Shoaib Saab and his team to please join us on stage and receive their well-deserved shield. The Martin Daw has been phenomenal in helping us through all the printing, the walls, everything on multimedia. Special thanks to them for being the part of this journey. We really acknowledge their contribution. Thank you. Our last sponsor for today is Nabi Qasim Derma. I would like them to be on stage to receive their well-deserved shield. We really appreciate for their contribution. Nabi Qasim Derma. ठीक हो गया Now let's call our moderators, the energetic Dr. Umar, the dynamic Dr. Hima Shaheen. Please come on the stage. In the end, we would like to present the shields to moderators. A very dynamic Dr. Ima. Very energetic Dr. Umar Mushtaq.
our brilliant moderator, Dr. Umar Mushtaq. You can see my excitement. But this excitement should prevail even after ending this session. So I would now like to invite my very dear sister, like younger sister, like Dr. Wajiha Nusrat. Her abilities do not require any appreciation from me because a lot has already been said about her, and the words would end, but her qualities would go on. And last but not the least, our very dear Dr. Dr. Noman Azam Bukhari. He is the next generation of dermatology. He's the next generation of dermatology. So we have chosen him among the moderators so that a new face comes in to bring in the new freshness to the dots as well. Done. Now I'm going to invite Dr. Aisha for the sample quiz. Dr. Aisha is coming for the sample quiz. And as well then live demonstration. Uh, After the sample quiz, she is going to perform the live demonstration. So let's see the power of dermatoscope in real life. So we are heading towards the last two segments of our second session today. First of all, I'm going to show you 10 images. It's going to be a short quiz, just 10 images, and you are going to see for yourself what actually is shown in the images. So you'll make your own diagnosis, and then I'm going to let you know what actually these images are. So one by one, I'm going to show you the images. This shall be followed by the live demonstration. I have my dermatoscope with me right now. So we are going to do the live demonstration after the quiz ends. And then the last but not the least would be vote of thanks by Dr. Rabia Ghafoor and Dr. Shamana Sharif. So let's begin with the quiz now. आप लोग अपने अपने डायग्नोसिस लिखते जाएंगे. This is image number 1. इसको मैं चेंज ओवर कर दूंगी अभी फ्यू सेकेंड्स में. सो इसको देख लें एंड मेक अप योर ओन डायग्नोसिस. दिस इज इमेज नंबर 1. देख लिया सबने. नंबर 3. आपने डायग्नोसिस लिखना है कि डायग्नोसिस क्या है. Sometimes there is a question whenever we talk in terms of dermoscopy. The second question always is after asking about the diagnosis कि अब करना क्या है. Do you need to intervene? Do you need to go for biopsy or not? Number 4. Number 5. Number 6. मैंने images बहुत सोच समझ के ये choose किए हैं. They are representative of the basic dermoscopic images जो routine practice में हमें नजर आते हैं. Number 7. Some of them are elephants. Number 8.
Number 9, second last. Number 10. PNCD means polarized non-contact dermoscopy. So ये क्या था? benign melanocytic nevus, very right. Melanoma arising in a nevus. It was a dermal melanocytic nevus, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, this one, and then grew out melanoma from it. So clinically patient को लगा होगा कि इसका कलर चेंज हो रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, इसमें दर्द हो रही है, whatever, and then melanoma came out of it. जी. Yes, it's a benign melanocytic nevus, globular nevus. Whenever we talk in terms of extremes of age, जैसे बच्चों में और बूढ़ों में, तो तब हमें इस तरह के नीवाई नजर आते हैं डर्मोस्कोपी में, ग्लोबुलर वंस. और जो मिडल एज होती है उसमें रेटिकुलर नीवाई ज्यादा नजर आते हैं. बट नॉनदलेस इट्स अ nevus. SK, seborrheic keratosis, very right. BCC, solar lentigo. Why? Curved lines on the periphery, moth-eaten appearance, homogeneous brown color. सो सोलर लेंटिगो बड़ा कॉमन है. अक्सर मिडिल एज के लोग आते हैं और काफ़ी बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा लीजन होता है लाइट ब्राउन कलर का. और ऑब्वियसली उसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है कि ये लेंटिगो में लिग्ना ना हो, मेलानोमा ना हो, एक्टिनिक केराटोसिस पिगमेंटेड ना हो या पिगमेंटेड बीसीसी ना हो. तो इसलिए डर्मोस्कोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच लीजन्स एंड दिस इज डायग्नोस्टिक फॉर सोलर लेंटिगो. जी. बीसीसी, गुड. बीसीसी क्यों? के ब्लू डॉट्स एंड ग्लोब्यूल्स, छोटे ग्लोब्यूल भी और बड़े भी. एकरल क्या? Yes, melanoma. This is parallel ridge pattern because the bands of the pigmentation are broader than the non-pigmented streaks in between. See there, यहाँ pigmented bands broader हैं, streaks narrower हैं. So furrows जो हैं वो thinner हैं और वो pigmented नहीं हैं, ridges pigmented हैं. So parallel ridge pattern, melanoma. SCC, white circles, SCC. वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं मिडल में, बहुत तरह की 3-4 तरह की वेसल्स नजर आ रही हैं. लीजन एसिमेट्रिकल है, यहाँ पे आपको नेटवर्क भी नजर आ रहा है, कहीं पे टिपिकल है कहीं पे एटिपिकल है. मेलानोमा, मेलानोमा. सो ये हमारा जनाब लास्ट स्लाइड थी. ठीक है जी. सो वी आर डन विद द क्विज एंड सॉरी बुक गिफ्ट. बुक ऐसे थोड़ी गिफ्ट मिल जाती है. मुझे कैसे पता है कि आप लोगों ने 10 आउट ऑफ 10 किए हैं? सारे बताए हैं बट किसी ने नोटिस इस तरह तो हम अलग से नहीं कर सकते हैं. लेकिन विल फाइंड आउट अ वे हु टू अवॉर्ड द बुक. आई हैव द बुक विद मी एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू अवॉर्ड. हम सब, आप सबका डेटा हमारे पास मौजूद है बिकॉज ये CME एक्रेडिटेड एक्टिविटी और वो फिल करना भी जरूरी था. सो वी नो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हु आर हियर टुडे एंड द बुक शैल गो टू वन ऑफ यू. यू विल गेट टू नो. So now we are heading forward for the live demonstration to see with the Dermoscope. Should be a voluntary participant. आ जाएं प्लीज, आ जाएं. और ये मुझे जरा बता दें कहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट करना है. इधर ही करते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. इधर आना बेटा. Okay, so there are multiple types of dermatoscopes. The one which I have with me is Heine Delta 30 Pro. तो मैं इसके साथ आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी और इससे फर्क नहीं पड़ता कि डर्मोस्कोप कौन सी है, डर्मलाइट है या हाइनी डेल्टा है या फायरफ्लाई प्रो है. आप हर डर्मोस्कोप से सेम प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हुए लीजन को कैप्चर भी कर सकते हैं और उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं.
और अभी वॉलंटरी हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं. ओके, शी हैज गॉट अ लीजन ऑन द स्किन. यस, तो ये सबको नजर आ रहा है. शी हैज गॉट अ पिगमेंटेड लीजन ऑन द पाम, और ये इनका लेफ्ट हैंड है. सबसे पहले डर्मोस्कोपी जब आप करेंगे रूटीन में, तो सबसे पहले आपने क्लिनिकल फोटो बनानी होती है. सो बिफोर यू पुट दिस स्कोप ऑन द लीजन, यू फर्स्ट टेक आउट योर फोन्स. अच्छा, आपने पकड़ना है, ठीक है. तो दिस इज, बाय द वे, दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज माय एल्डर डॉटर. हर नेम इज सालेहा फातिमा, एंड शी इज गोइंग टू, ओके, शी डजंट लुक लाइक माय डॉटर. ये मेरी छोटी बहन है. फाइन. सबसे पहले आपने क्लिनिकल फोटो बनानी होती है, क्योंकि ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखा कि करना कैसे होता है. सो वंस यू हैव नॉट टेकन द क्लिनिकल फोटो, यू आर डूम्ड आफ्टरवर्ड्स. यू कैन नॉट कोरिलेट. क्लिनिकल फोटो को ही कोरिलेट करना होता है डर्मोस्कोपी से. सो दिस इज द डर्मोस्कोप. ये इसलिए चूज किया मैंने आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो सारे फंक्शंस है वो तमाम अच्छी डर्मोस्कोप्स में होते हैं. एंड आई होप दिस इज विजिबल टू यू. ओके, सो एक तरफ तो हम देखते हैं, दूसरी तरफ इसका लेंस होता है जिसको स्किन के ऊपर रखते हैं. देर आर 3 बटन्स टॉप सरफेस के ऊपर, और एक तो पुश स्टार्ट होता है. फ्यू सेकंड्स के लिए आप बटन को पुश स्टार्ट करते हैं, और अगर ये नजर आ रहा है तो यस, ये जो सेंटर वाला है, दिस इज द स्टार्ट, और इसके ऊपर सिंबल भी वही है जो ऑन और ऑफ का सिंबल होता है. तमाम डर्मोस्कोप्स के ऊपर इस तरह का एक बटन होता है, और इसको फ्यू सेकंड्स के लिए आपने प्रेस करना होता है, एंड इट स्टार्ट्स ऑफ. ठीक है, ये स्टार्ट हो जाती है. देन देर इज अनदर बटन ऑन द राइट हैंड साइड, इसके ऊपर सन टाइप चीज बनी हुई है. थोड़ा ज्यादा नजर आ सकता है? ओके, नजर आ रहा है, फाइन. तो जब हम इसको प्रेस करते हैं, एलईडी लाइट्स या बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं. देखिए, स्किन का जो ग्लेयर होता है वो सम टाइम्स इतना ज्यादा होता है कि हमें एलईडी लाइट्स को कम करना पड़ता है. सो दीज आर ऑल द एलईडी लाइट्स इन द डर्मोस्कोप, और एक बटन से आप इनको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, विच आई एम डूइंग राइट नाउ. ओके, on the extreme left hand side is the P, written on the button is P. ये सबसे काम का बटन है, और ये पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड मोड्स के बीच में टॉगल करता है. सो हम इसको प्रेस करते हैं, फिर लीजन को देखते हैं, फिर एक दफा दोबारा प्रेस करते हैं, फिर लीजन को देखते हैं. जब लीजन में से बहुत ज्यादा स्किन में से ग्लेयर आ रहा होगा, शाइन आ रही होगी, दैट मीन्स कि वी आर लुकिंग एट द नॉन पोलराइज्ड मोड. और अगर वो ग्लेयर और शाइन खत्म हो जाएगी, एंड वील बी एक्चुअली एबल टू सी अंडर द स्किन, दैट वुड बी द पोलराइज्ड मोड. हर डर्मोस्कोप, अच्छी डर्मोस्कोप में पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड का बटन मौजूद होता है, लेकिन स्टार्टर वाली जो स्कोप्स थी उनमें नहीं था. अभी भी DL200 में नहीं है, DL100 में भी नहीं है. तो आपने जब डर्मोस्कोप परचेज करनी है, दिस इज समथिंग टू लुक फॉर. यू हैव टू हैव अ डर्मोस्कोप दैट कैन टॉगल बिटवीन द 2 मोड्स, अदरवाइज आपको कोई फायदा खास नहीं होगा. ठीक है. सो वंस यू हैव गॉन थ्रू द बेसिक फंक्शंस, बहुत काम आसान है. जैसे मैंने पहले कहा था कि कैप्चर करना पिक्चर तो कोई मसला ही नहीं है. आप इसको रखें और फोन के साथ आप इसको कैप्चर कर लेंगे. बाय द वे, आई नीड अ फोन ऑल्सो. आई नीड अ फोन ऑल्सो. आईफोन दे दें कोई, आईफोन कोई दे दें. असल मसला तब आता है जब आपने इंटरप्रेट करना होता है, और वो इंटरप्रिटेशन हम सुबह से सीख रहे हैं कि आपको दिख क्या रहा है, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सी अरेंजमेंट्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं, क्या क्लूज हैं. सो नाउ ट्रेडिशनल डर्मोस्कोपी जैसे हम करते हैं, सो आई एम गोइंग टू टेक द पिक्चर्स. और इसके लिए अगर आईफोन है या दो कोई भी फोन है तो 2 पे ले जाएं, 2x पे ले जाएं. क्लिनिकल फोटो आपने स्ट्रेट अवे नहीं बनानी है, आपने 2x पे जाके कैमरा सेटिंग में फिर से फोटो बनानी है. जो उसके पिक्सल्स होते हैं वो अनमैच्ड होते हैं. So I have captured a photo, clinical photo. Next, I'm going to start this dermoscope on. I'll put it on the lesion, and then I'll see through it if I'm on the polarized mode or non-polarized mode. By the way, फोन के साथ अटैच करने के लिए एक अडेप्टर होता है जो डर्मोस्कोप और फोन को कनेक्ट करता है, बट इट्स अ टीडियस जॉब एंड इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम उनको कनेक्ट करना. विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव लर्नड टू टेक द फोटो इवन विदाउट दैट अडेप्टर. और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, you can also learn to take pictures even without attaching that adapter to the phone. So let me see now what actually it is.
ओके, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर है। अब इसको आपको कैसे दिखेगा, क्योंकि कैमरे की आँख इसके अंदर तो नहीं देख पाएगी, लेकिन व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल टेक अ पिक्चर फ्रॉम द फ़ोन एंड इट शुड बी विजिबल ऑन द फ़ोन। अगेन 2x के ऊपर मैंने अपना कैमरा कर लिया है। अभी हमने जिससे हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो और स्किन का मैच कर जाता है। So I have captured the image just by putting the phone on the screen, and this is the image that I have captured right now. आपको नजर आ रहा है? Yes. So what is it? Parallel furrow pattern जो हमने अभी पढ़ा था, इसको मैं तो ठीक है। ये पिक्चर कैसे आ सकती है? वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी मैंने जेल नहीं लगाई है, जेल लगाएंगे तो और भी अच्छी पिक्चर आएगी। सो दिस इज ऑल, इससे ज़्यादा कोई साइंस नहीं है, ऐसे ही करना होता है सारा। बस आपकी डर्मोस्कोप कोई भी होगी, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यू विल मेक अ पिक्चर। एंड नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक कि आप लोग इसको फौरी तौर पे लेबल कर लें। लेबल करने का मतलब है पेशेंट का नाम आप लिखें ना लिखें, एज ज़रूर लिखें, एरिया ज़रूर लिखें कि इतनी उम्र का पेशेंट था और उसके फलां जगह पे लीजन था। You store the pictures at the same place in your system, the clinical photo as well as the dermoscopic photo. एक ही जगह के ऊपर स्टोर करेंगे और हर मंथ में हर डेट का डेटा अलग अलग करते जाएंगे, so that when biopsy report comes, if at all it comes, you have ordered a biopsy, you can easily find out retrospectively कि ये लीजन कौन सा था। ठीक है? So I think this is done with the live demonstration. यस, जेल दोनों में अच्छा काम करती है, पोलराइज नॉन पोलराइज दोनों मोड्स में अच्छा नजर आता है। जेल क्या करती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच कर देती है, कोई इंटरवीनिंग बीच में एयर नहीं रहती। हम जेल को डर्मोस्कोप से भी टच कर रहे हैं और जेल ने स्किन को भी टच किया हुआ है, तो प्रैक्टिकली वन सरफेस बन जाती है थ्रू आउट, और वो बहुत अच्छा दिखाती है। अभी जो इमेज मैंने आपको कैप्चर करके दिखाया फोन से, इट वुड हैव बीन मच क्लियरर अगर हम अल्ट्रासाउंड जेल, सिंपल जेल के साथ इसकी डर्मोस्कोपी करते। विजुअलाइजेशन के लिए, प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि छोटे छोटे डॉट्स भी मैटर करते हैं, तो इसलिए चीज़ें जब अच्छी क्लियर नज़र आ जाती हैं तो वी आर प्रीटी मच एबल टू आइडेंटिफाई ऑब्सक्योर फीचर्स इवन। यस, डॉक्टर सना ने क्वेश्चन पूछे बहुत ही अच्छे कि डू वी रियली नीड टू पुट द जेल फॉर लीजन्स ऑन द नेल एंड स्कैल्प? फॉर नेल्स यस, फॉर स्कैल्प डिपेंड्स। फॉर नेल्स आप जेल अगर नहीं रखेंगे तो नेल्स के तो वैसे ही बहुत अच्छे नजर आते हैं, तो आप जेल रखते हैं तो बड़ा अच्छा नजर आता है। स्कैल्प, इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलपी और डीएलई, यस यू हैव टू पुट ऑन जेल। अगर आप एलोपेशियाज को देख रहे हैं, यू डोंट नीड टू पुट ऑन द जेल, और एलोपेशिया के लिए ड्राई डर्मोस्कोपी इज वंडरफुल। पोलराइज नॉन पोलर, देखें जो ये वाली डर्मोस्कोप मेरे पास है और इस तरह की सारी होती है जिसमें लीजन को एक्चुअली टच किया जाता है, दिस इज कॉन्टैक्ट डर्मोस्कोपी, इसमें तो जेल का बहुत ज्यादा रोल है। बट इफ वी आर एमिंग टू लुक फॉर ब्लड वेसल्स एंड वी आर नॉट गोइंग टू टच द स्किन विद द डर्मोस्कोप, नॉन कॉन्टैक्ट डर्मोस्कोपी पर्टिकुलरली लुकिंग फॉर द वेसल्स, तो उसमें जेल का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ भी ना आए, स्किन के ऊपर जस्ट एयर हो बीच में। दैट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट, वो स्पेसर डिवाइस होती है, इसके आगे भी लग सकती है। अगर मैं स्पेसर डिवाइस इसके आगे लगा दूं और फिर इसको लीजन के ऊपर रखूं, तो वो एक रिम की शक्ल में साइड पे स्किन को अटैच करेगा, पर पूरा प्रेशर डर्मोस्कोप का स्किन के ऊपर नहीं डलेगा, और वो स्पेसर डिवाइस की वजह से ये नॉन कॉन्टैक्ट डर्मोस्कोपी में शिफ्ट हो जाएगा। हीमेंजियोमा, इफ यू हैव अ स्पेसर डिवाइस, वेल गुड, फेयर इनफ, लेकिन अगर नहीं है तो एक थिक कुशन ऑफ जेल बना लें, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, लगानी चाहिए एक्स्ट्रा, पहले तो स्केल्स को भी वाइप ऑफ करना चाहिए, क्योंकि वो अगर स्केल्स बहुत ज़्यादा रास्ते में पड़े हुए हैं वो आपको रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ डॉटेड ब्लड वेसल्स नहीं दिखाएंगे, सो एक्स्ट्रा स्केल्स को आप वाइप ऑफ करते हैं। और दूसरे नंबर पे यस जेल लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, जेल ज़्यादा सारी लगाते हैं और उसके ऊपर जैसे मैंने बताया था कि जेल के ऊपर अपनी डर्मोस्कोप को फ्लोट करने देते हैं, एक्चुअली उसका वजन नहीं डालते स्किन के ऊपर, वजन डल गया तो ब्लड वेसल्स ऑब्लिटरेट हो जाएंगी।
Depend करता है what are you looking for. If you are looking for a case of alopecia and you are going to differentiate between say early stages of alopecia areata or early female pattern hair loss or chronic telogen effluvium, all three are clinically the same. अगर इन तीनों को differentiate करना है, you don't need to put on the gel. पोलराइज में भी, इसमें पोलराइज में भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन पोलराइज में कभी कभी इतना ज्यादा ग्लेयर होता है, सरफेस रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज सो मच कि हम पोलराइज मोड में ही देख रहे होते हैं मोस्टली. यस, सेम इज ट्रू. अच्छा, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है. स्टेरिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, कभी कभार ऐसे होता है कि हमें नहीं पता ये पैच एलोपेशिया का, टीनिया कैपिटस का पैच है या एलोपेशिया एरियाटा का पैच है, ग्रे केसेस होते हैं, उसमें आपने डर्मोस्कोप रखी है तो आपने इसको साफ भी करना है. तो उसके लिए बेस्ट होता है, उसे कहते हैं आइस कैप. दैट्स कॉल्ड एन आइस कैप. प्लास्टिक का छोटा सा गोल सा एक कैप होता है, वो इसके लेंस के आगे लग जाता है. तो सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड लीजन्स की डर्मोस्कोपी करने के लिए आइस कैप्स लगाने होते हैं. और अगर आइस कैप आपके पास नहीं है, जैसे मेरे पास अक्सर नहीं होते, तो आई डू द डर्मोस्कोपी एंड देन एल्कोहल वाइप के साथ में उसको 2 से 3 दफा लेंस को साफ कर लेती हूँ. लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लीन इट बिफोर यू पुट ऑन द अदर पेशेंट. Thank you so very much everyone for giving me beautiful participation. बहुत अच्छी अटेंडेंस. मुझे लिटरली बहुत खुशी हुई है कि हमारा आज का जो फंक्शन था वो बहुत सक्सेसफुल रहा. आप लोगों ने ढेर से भरपूर किस्म की इसमें पार्टिसिपेशन शो की है और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी आई होप आप सबको समझ आ गई होगी. गो अहेड, गो टू योर इंस्टीट्यूशंस, परचेज योर ओन डर्मोस्कोप्स एट लीस्ट एट इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड स्टार्ट डूइंग इट. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Dr. Rabia Kapoor, who came all the way from Karachi for this conference. She is also a senior vice president. So a big applause of him for Dr. Rabia Kapoor. Thank you, Dr. Noman. I'll invite Dr. Shavana with me. She is head of department of Rawalpindi Medical University. Assalamu alaikum. So, Dr. Rabia, you travel all the way from Karachi. So, how is your journey of dermoscopy? Would you like to tell us about it? Yes, about 5 years back when there was COVID lockdown, uh, uh, before that I didn't know much about dermoscopy. पता था कि dermoscopy लेकिन ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं थी. तो एक ऑनलाइन हुई जो डॉक्टर आयशा गियास ने की थी, एक ऑनलाइन जूम के ऊपर वर्कशॉप. उसके बाद मुझे लाइक आई थॉट कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर अस एज क्लिनिशियंस एंड फॉर आवर पोस्ट ग्रेजुएट्स. So I organized, I think it was the first workshop on dermoscopy in July 2021. It was lockdown period and Dr. Aisha graciously accepted the invitation and came to Karachi to facilitate this workshop. And it was wonderfully attended and very well. Then I arranged this dermatoscope for my ward, and we started doing the dermatoscopy there. And now we are here. So what was your course? So I remember that about 5 years back when Dr. Rao Babar, he brought a dermoscope for us in our department. तो उस वक्त हमें पता भी नहीं था कि इसको यूज़ करना है. हम उसको बस रखते थे ऊपर और टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर्स लेते थे और फिर उनको इंटरप्रेट करना एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम था. एंड द सेम कि डॉक्टर आयशा ने एक ऑनलाइन वर्कशॉप कंडक्ट करवाई और उसके बाद soon after your workshop, we invited her to Rawalpindi and that workshop was a huge success. It was heavily attended by the doctors of the twin cities. और उससे twin cities के doctors में भी interest generate हुई and many people started buying dermoscopes and many institutions now in twin cities they are using dermoscope. हमारी अपनी understanding dermoscope के बारे में बहुत बढ़ गई है and now it's a routine procedure. All of our postgraduate residents are trained in it. They do it and then they interpret it, and of course that WhatsApp group by Dr. Aisha is a very, very helping in this regard, and we share images with it. Or recently, I put a very difficult case of melanoma, and on that, and Dr. Aisha immediately asked me to move it because it's a very, very interesting case, and we will discuss it later on.
So it's a huge educational platform. Dr. Rabia, your flight also got late yesterday, and I think you reached about 1 a.m. So how was the today's experience? Was it worth I think attending? it was a wonderful event of international. We had international speakers, Dr. Baba Rao, Dr. Asman, Dr. Aisha. It was of international caliber. This conference was of international caliber, and we had this wonderful audience. I think recently किसी dermatology की CME में इतनी wonderful audience और इतनी attentive audience और इतनी ज़्यादा ऑडियंस यंग जनरेशन और आई थिंक यही हैं जो कि आगे लेकर चलेंगे इस सफ़र को जो कि आई थिंक 5 साल पहले शुरू हुआ था और अब हम भी सीख रहे हैं और सीख रहे हैं और ये यंग जनरेशन और सीखेगी और जो हमने शुरू किया डॉक्टर आयशा ने, डॉक्टर ताहिर जमील हारून ने और आज सारे स्टार ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट से लाहौर के भी और बाकी सिटीज़ से भी आप भी आई तो आई थिंक ये एक तो डॉक्टर आयशा की मेहनत और हमारी ऑडियंस जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब बनाया। Okay, now this is just the beginning, and actually there is a long way to go. So there are many activities coming on the way because it's an educational platform. So there are many CMA activities. There is a very good website with the name of Dots. I would suggest all of you to go there and also to get the membership of this society. Today is just the launching ceremony, just the start of a very, very successful journey, which I can see from today, from the well attendance of today's workshop. So inshallah, see you all there. And from the on the behalf of whole team of Dots, I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you for attending today's launching ceremony and today's workshop and making it a huge success. So thank you very much. In the end, I will say with hearts united, purpose clear, a new society is here. For shared vision, strength we find, a future bright for all mankind. Thank you so much. Thank you so very much, Dr. Rabia Kapoor and Dr. Shavana. They joined all the way from Dr. Rabia from Karachi and Dr. Shavana from Islamabad. So we are going to formally close the session. And before I close the session, few words about my fellows in dermatology, Unit 2, King Edward Medical University. I was blessed in having Dr. Memuna, Dr. Asma, Dr. Madiha Sanai, and I should not forget the names, Dr. Zunaira, Dr. Vajiha Nusrat, of course, she's part of cabinet also, and all the consultants, PGs, and particularly the HOs also. एंड मेरे अपने पीजीज ने तो काम करना ही करना था, वो जाहिर है भाई सुपरवाइजर कहेगा तो उनको तो करना पड़ेगा, बट जो मेरे पीजीज नहीं भी थे उन्होंने भी अपनी फुल एफर्ट शो की और बहुत ज़्यादा काम किया. And I really appreciate and acknowledge all your efforts, and I hope and I pray and I wish you a very bright future ahead of you. Thank you so very much all my team Dermatology Unit 2 KEMU और गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया. अभी बैठे भी हुए हैं सामने, बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपके आने से वाकई फंक्शन में जो है ना वो जान पड़ गई. सो दिस इज एंड फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू वेरी मच. और अगर आपने फर्दर कुछ भी अपने फीडबैक्स देने हैं, द वेबसाइट इज ओपन. वील ओपन अप द फीडबैक्स ऑल्सो. Kindly do visit the website. It's you who are going to make it a successful website also, because there is going to be a huge traffic on it as well. We are going to mature the website और उसके ऊपर learning materials भी बहुत सारे upload हो जाएंगे. CME certificates shall be e-certificates, and once the procedure is complete in coming few days, we shall email all of you. Thank you so very much. Until next time, keep shining and stay happy. I would like to invite the founding members of DOTS to please join on stage for a formal photograph. All the founding members, Dr. Shavana, Dr. Rabia Ghafoor, Dr. Naeem, Zargham Bhai, Professor Tahir Jameel. Dr.